Assalamu alaikum students. Today we are going to see exercise 3.3 of arithmetic progression. In exercise 3.3 we have to find out sum of n terms of arithmetic progression. Sum of nth terms of AP. In previous video we have seen the nth term of AP. The formula for nth term is Tn is equal to a plus n minus 1d. This was used in previous video. Now in this video we have to use the formula for sum of n terms of AP. The formula for sum of n terms is equal to Sn is equal to n upon 2 into bracket T1 plus Tn. This is the formula for sum of n terms of AP. Now we know T1 is A and Tn is A plus n minus 1d. If we put instead of T1 A and instead of Tn we put the formula, we get one more formula for Sn is equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 d. दोनों भी फॉर्मूले n टर्म्स की एडिशन मालूम करने के हैं, सम ऑफ n टर्म्स मालूम करने के हैं. अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है और n दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे, और अगर हमें n दिया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6. गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 6. a is equal to 6 and common difference is 3. b is equal to 3. Find S27. S27 means here n is equal to 27. n is equal to 27. We have to find sum of 27 terms of AP. For finding sum, we have given A, D and N. So we use the formula, second formula for Sn. Sn is equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 d. By using this formula, we find out sum of S27. Now put the values. S27, value of n is 27 upon 2 into value of a is 6 plus n is 27 minus 1 and d is 3. 27 डिवाइड नहीं होता है, उसको ऐसे ही रखो. डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2 6 are 12 प्लस 27 minus 1 26 into 3. 27 upon 2 into. Now here we have to multiply first 26, then add 12. 12 plus 26 3s are 78. Adding these two, 27 upon 2 into, if we add this two we get here 90. Multiplying by 90 and then divide by 2. 90 से multiply करेंगे, 9 7s are 63, 9 2s are 18, 18 plus 6 24 and divide by 2. If we divide by 2 we get here 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2,
2 5s are 10. 1215. This will be the S27. Here in question number 2, find the sum of first 123 even natural numbers. Students, we know the natural numbers are all counting numbers, and here we have to find out sum of even natural numbers. Even natural numbers are 2, 4, 6, 8, which are divisible by 2. First 123 even natural numbers, that is n is given here. First term 2. First of all we write even natural numbers 2, 4, 6, dash 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 are even natural numbers. These are even natural numbers. 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. We have to find sum of first 123, that is n is 123 given. Here first term is 2 and difference between these two is 4 minus 2 is 2. As this is AP, so we have to calculate the first difference only. Now D is equal to 2, A is equal to 2 and n is 123. We can calculate Sn. Formula for Sn will be n upon 2, 2a plus n minus 1d. N is substituting the values. S 123 is equal to 123 upon 2. 2 into value of A is 2 plus n minus 1, that is 123 minus 1, D is 2. 123 डिवाइड नहीं होता है, वैसे ही रखेंगे अपॉन 2. Here take 2 common. 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम बाहर ले लेते हैं, ये इससे डिवाइड हो जाएगा. इसके लिए अंदर बचेगा 2 प्लस 123 माइनस 1, 122. So we get here 123 into, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 plus 122, 124. This is S123. Now multiplying these two, 124 into 123. 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4s are 12, 12 3s are 36 plus 1 37. 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4s are 48, कैरी 4, 12 12s are 144, 4 plus 148. 2 15 2 5 1. S123 will be 15,252. In question number 4, in an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of 56 terms. 19th term दी हुई है हमें 52. P19 is equal to 52 and 38th term is given 128. T38 is equal to 128. Now formula for 19th term will be T19 is equal to A plus 18D, which is equal to 52. And here T38, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम. T38 is equal to A plus 38 से कम 37D is equal to 128. This is equation number 1 and this is equation number 2. इससे पहले वीडियो में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए थे. साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाती हैं, जिससे हमें इजीली जो भी फाइंड आउट करना होता है वो मिल जाता है. Now here we have to add these two terms.
Why we have to add? So that we get here 55D. As we have to find out 56 टर्म्स का सम मालूम करना है, हमें यहाँ पर 55D चाहिए। 55D के लिए हम यहाँ पर एडिशन करेंगे दोनों की। We add these two, 1 plus 2, we get here a plus a, 2a plus 18 plus 37, 55, d is equal to 128 plus 52, 8 plus 2, 10, 180, 180. Now here 2a प्लस 55D की जो वैल्यू मिली है, इसको हमें वैसे ही रखना है और हमें यहाँ पर सम ऑफ 56 टर्म्स के लिए Sn का फॉर्मूला लिखना है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n 56। वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ 56 टर्म्स। 56 is equal to 56 upon 2 into bracket 2a plus 56 minus 1 55d. Now here we get 2a plus 55d which is 180. Value of this is 180. Substituting the value 56 upon 2 into 180. Reason by third. Write here equation number 3. By 3 we get 2a plus 55d is equal to 180. 180 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 2 9s are 18. 9 से मल्टीप्लाई करेंगे s56 is equal to 0 वैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 are 54, कैरी 5, 9 5 are 45 plus 5 50. Answer will be 5040 5040. See question number 5. Complete the activity to find the sum of natural numbers between 1 to 140 which are divisible by 4. Now here we have to write the activity and find out value of n and value of Sn. For finding n, we have to write down the numbers which are divisible by 4 in between 1 to 140. Students, remember one thing. We have to write the numbers between 1 to 140. In your textbook, it is given from 1 to 140. If it is given from 1 to 140, then we have to write the numbers from 4 to 140, as 140 is also divisible by 4. So, write there in question between 1 to 140. That is, 140 is not included in the numbers which are divisible by 4. So, we write here the numbers 4, 8, 12, dash 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 up to 136, as we have to exclude 140. We have to write the numbers between 1 to 140. अगर यहाँ पर हमें from 1 to 140 देता है तो हम क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पर लास्ट टर्म जो रहेगी 140 लिखेंगे, क्योंकि 140 जो है वो 4 से ऑलरेडी डिविजिबल है, इसलिए हम 140 को भी इंक्लूड करेंगे। और अगर यहाँ पर हमें देता है बिटवीन 1 to 140, देन वी राइट हियर 136 द लास्ट टर्म। नाउ फॉर फाइंडिंग n, we have to write down first term a is equal to 4. Difference between the terms is 4 as they are divisible by 4, and the last term tn is equal to 136. n की वैल्यू मालूम करनी है हमें, इसलिए हमें tn का फॉर्मूला यूज करना होगा।
Tn is equal to a plus n minus 1d. This is the formula for Tn. Tn का फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें वैल्यूज पुट करने हैं. Tn is 136 is equal to a4 plus n minus 1. d is also 4. ये 4 राइट साइड में है प्लस साइड के साथ, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस हो जाएगा. 136 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4. 136 माइनस 4 वी गेट हियर 132. n माइनस 1 इंटू 4. अब ये 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, राइट में, लेफ्ट में आएगा डिवीजन में. डिवाइड करते हैं हम 4 से. 4 3s are 12, 4 3s are 12, n माइनस 1. ये माइनस 1 है राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा प्लस हो जाएगा. 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n. देयरफॉर 33 प्लस 1 वी गेट हियर n इज इक्वल टू 34. In the activity we have to find out Sn, and the formula for Sn is given n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1d. We had calculated n. The value of n is 34. 34 upon 2. Value of a is 4 plus n is 34 minus 1, d is 4. S34 is equal to 34 divided by 2 we get here 17 into bracket. पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 4 to 8 प्लस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 33 इंटू 4. S34 इज इक्वल टू 17 इंटू ब्रैकेट 8 प्लस मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे हम. 4 3s are 12, 4 3s are 12 प्लस 1 132 प्लस 8 17 इंटू 8 plus 132 we get here 140. Multiplying we get value of is 34. 17 zeros are 0. 17 fours are 68. Carry 6. 17 ones are 17 plus 6 23. This will be the answer for Sn.